by Daphne Koller. In this topic, what we are learning from online education. First in English, we and then I will try to explain in Urdu. In this talk, the Dauphin Collar, co-founder of Coursera, explore how online education is transforming learning at scale. She identified the key opportunity, challenges, and implication of bringing top university course to global audience for free. The talk is compiling because it addresses not only accessibility but also how data from online course can deepen our understanding of how students learn. In this first topic, we discuss about the access and scale. Caller highlights how many learners worldwide lack access to high quality course in some parts of the world. Access to quality education remains a challenge. By delivering online courses from top university, the barrier of geographic or cost is reduced. Now the other topic about she discuss about that personalizations and learning design. Caller emphasized that online education allow new design freedom shooter minimum lecture of 8 to 12 minutes embedded question branches learning paths. Students move at their pace, revisit concept and course are structured to support individual pathway. He also talked about the peer learning and communications. With large enrollment, one challenge is feedback and engagement. Caller describe how peers grading and self-assessment have been deployed and found to correlated while with instructor grading. Students worldwide from study group and help each other true global classroom. Another topic she discussed about that learning at scale. A major theme, the ability to collect massive data on how students learn every click, pause, submissions. This enable research into learning strategy in a way impossible in traditional classroom. Caller reference the two sigma problem for the education Benjamin Bloom, who one tutoring out from traditional instruction by two standard deviations and suggest the online platform may help approach that level by smart design. She forces that university will not disappear, but most changes large lecture classroom may evolve while institutions focus more on meeting crucial thinking social skills. We also talk about the strength of the talk. The talk is grounded in a real experiment via Coursera and thus blends visionary ideas with practical evidence. The emphasis on two driven insight into learning is timely and add a research dimension, not just hype. The talk addresses global equality, equity,
pointing out the talent exists everywhere but opportunity often does not. It is its layout actionable design principle that short video segment, embedded questions, peer grading, and community building. He also talked about the weaknesses and consideration. While the promise is strong, some of the challenges underexplored, for example, how to support learner in low resource setting, internet access, language barrier. He also talked about that the competitions rates in MOGs, MOOGs means massive open online course remain low. The target does not deeply analyze reason for top drop off. The transitions from access to meaningful credentialing employment outcome is less fresh out. Access alone is not enough if the skill does not transfer. The personalized model Collar proposes is still considered by the platform's ability to adopt, and the talk does not fully address how to sports learner and how fail far behind. In the next topic, he also discuss about the implication of learner and educators. For learner, the talk is a call to view online learning not as a lesser alternative but as viable way to access high quality content. With responsibility, you must be self motivated, organized, and ready to engage activity. And how the educators and institution, it's just the pivot instead of focusing purely on lecture delivering embrace model that emphasize engagement, data analytics on learning, peer interaction, and global student community. For the policy maker, the idea that education can be democratized but only if infrastructure, internet access, device, language support is addressed is reminder that teach is only part of the solution. For the context, for example, Pakistan developing country, the talk message reasons resonate. Many talented students may lack access to top university or instructor. Online education offer bright but local support system, language, contest, relevance, and connectivity must be addressed. My overall assessment is she talk about the overall assessment. This talk is very valuable for everyone interested in future education. It avoids simplistic claim and instead
It is very valuable for everyone interest in the future of education. It avoids implicit claim and instead to research infected vision. Online education can evolve for you. Now I'm as a host leaders talk offer a rich content you can leverage, thinking about how to incorporate online element, peer learning, and data information feedback into your own session. If I were to give a score out of 10, I will give it 8.5. Strong, inspiring ground with room for deeper exploration of the barriers in less resource contexts. आइए अब इस टेक टॉक को उर्दू में बयान करते हैं और इसकी वो अहम नुकात जो वो बयान करना चाहती हैं हम इस टेक टॉक में टेडेक्स टॉक में बयान करते हैं। दाफे कॉलर की गुफ्तगू हम ऑनलाइन तालीम से क्या सीख रहे हैं एक बसीरत अफजा तहरीर है जिसमें वो बता रही हैं कि आला जामिया कोर्सेज ऑनलाइन फ्राहम करने से कैसे सीखने के तरीके तब्दील हो रहे हैं। वो ये भी बताती हैं कि ऑनलाइन तालीम सिर्फ रसाई बढ़ाने का ज़रिया नहीं बल्कि ये सीखने के अमल को बेहतर समझने का एक मौका है। वो रसाई और पैमाने के लिहाज से वो बताती हैं कि दुनिया में बहुत से हिस्सों में मेयारी तालीम तक रसाई मुश्किल है। ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए जोग्राफियाई या माली रुकावटों को कम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक स्टिफोर्ड क्लास जो कि 400 तलबा के लिए थी ऑनलाइन तलबा के तक पहुंची। वो शख्सियत और तजदीद डिज़ाइन के हवाले से बताती हैं कि ऑनलाइन तालीम हमें नए डिज़ाइन के मौके फराहम करती है। इस 15-20 मिनट की गुफ्तगू में मुख्तसर वीडियो में सवालात के दरमियान तलबा को मुख्तलिफ राहों पर चलने की इजाज़त है। तलबा अपने रफ्तार से सीख सकते हैं, अहम नुकात पर वापस जा सकते हैं, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इनको तरतीब दे सकते हैं। और सीखने और कम्युनिटी के लिहाज से वो बताती हैं कि जब एक कोर्स में हज़ारों तलबा हों तो फीडबैक और तामल एक चैलेंज बन जाता है। कॉलर वजाहत करती हैं कि हमने पीटर ग्रेडिंग और खुद शख्सियत के इस्तेमाल किया है, ये नतीजे अच्छे आए हैं। तलबा दुनिया में खुद से ग्रुप बनाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक किस्म का ग्लोबल क्लासरूम है। फिर वो इसके मुतालिक डाटा और पैमाने पर सीखने पर जोर देती हैं कि सबसे अहम बात है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें तलबा के सीखने की तमाम नकलें जमा करने का मौका देते हैं। हर क्लिक पर, हर वक्फे पर, कोर्स पर ये हमें जानने की इजाज़त देते हैं तलबा किस तरह सीखते हैं। कॉलर तो सिग्मा मसला का हवाला देती हैं कि एक नौजवान एक ट्यूटर दिया जाए तो सीखने का फ़र्क बहुत कम रह जाता है। अगरचा चैलेंज और नतायज के मुताबिक वो बताती हैं अगरचा इम्कान बहुत है कि कॉलर इस बात को तस्लीम करती हैं कि सिर्फ कोर्सेज दस्तियाब करना काफ़ी नहीं है तलबा की के लिए। अहम है कि आल हौसला अफजाई तमाम चीज़ें हौसला अफजाई टेक्नोलॉजी इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़ुबानों की रुकावट ये बताती है कि यूनिवर्सिटी ख़त्म नहीं हुई बल्कि बदलेगी। बड़ी लेक्चर क्लासेस कब होंगी जबकि अदारे तलबा की जहनी महारत तनकीदी सोच और समाजी सलाहियतों पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। इस गुफ्तगू की जो खूबियाँ बयान है वो ये है कि
یہ گفتگو تجرباتی بنیاد پر ہے، حقیقی ڈیٹا، حقیقی طلبہ، حقیقی پلیٹ فارم تعلیم کو صرف مواد پہنچاتے ہیں کہ بجائے اس کے سیکھنے کے عمل کی گہرائی میں دیکھتے ہیں، عالمی نقطہ نظر پیش کرتی ہیں۔ تعلیم کا جغرافیائی اور مالی تقسیم ختم ہو سکتی ہے، عملی تجویز دیتی ہے کہ مختصر ویڈیو، طلبہ کا بااختیار ہونا، تعامل، کمیونٹی کا قیام۔ وہ اس کی کمزوریوں کو بھی بیان کرتی ہیں کہ اگرچہ وعدے بڑے ہیں، تاہم کم مسائل والے علاقوں میں انٹرنیٹ ڈیوائس زبان کی مدد کا مسئلہ کم زیر بحث ہے۔ میں عموماً کورس مکمل کرنے کی شرح کم ہے، اس گفتگو میں اس کی گہرائی کم ہے۔ وہ رسائی ایم ڈبلو سی رسائی سے مہارت اور ملازمت تک سفر کا واضح نہیں ہے۔ صرف کورس کرنا کافی نہیں، بلکہ اگر مہارت قابل استعمال نہ ہو، شخصی نوعیت کا تصور اچھا ہے مگر عملی نفاذ میں اٹھتی کاٹتی رکاوٹیں جنہیں مکمل طور پر ایڈریس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ طلبہ اور اساتذہ کے اثرات بھی بیان کرتی ہے۔ اس میں مختصر مجموعہ یہ ہے کہ یہ گفتگو میرے خیال میں کسی بھی جو تعلیم کے مستقبل میں دلچسپی رکھتا ہے دیکھنی چاہیے۔ یہ صرف ایک ہائی لیول ویژن نہیں بلکہ عملی اور تحقیقاتی بنیادوں پر مبنی ہے۔ کلام علی بطور سیشن غلام علی بطور سیشن کے میزبان آپ کے لیے بہت مفید ہے، یعنی ہمارے لیے یہ بہت مفید ہے کہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اگر ویسے مجھے اس میں ان کو نمبر دینے پڑے نا تو میں ان کو 10 میں سے 8.5 نمبر دوں گا۔ ان کی ان مضبوط، متاثر کن اور زمینی حقائق پر مبنی اس طرح کی چیزوں پر اور تبدیلیوں کی طرف انہوں نے جو اشارہ کیا ہے وہ بہت ہی اچھا کیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آنے والے مستقبل میں بہتری پیدا کر سکیں۔ شکریہ۔